the extraordinary album, and the people are loving the songs. What do you have to say about that? थैंक यू सो मच फॉर द विशेस एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लोगों को गोरी है पसंद आ रहा है, वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ हो गए हैं एंड इट्स ग्रोइंग एवरी डे। अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं, तो अगर ऑलरेडी लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। सो आई एम वेरी हैप्पी। What is the reason, one reason that made you choose this song? Actually, I had the rights for Gori Hai for the last 6 years. I was asked to make it 6 years back. और तब हमने एक वर्जन बनाया था, लेकिन मुझे उस वक्त पे लगा कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ नॉट एट एन एक्साइटिंग टाइम, तो आई केप्ट इट। और इस साल पता नहीं अचानक से मुझे झटका लगा कि मुझे ये गाना बनाना है, तो वी रीवर्कड इट कम्प्लीटली, मेरा कम्प्लीटली फ्रेश अरेंजमेंट प्रोडक्शन, and I just feel that this is a timeless classic song. It's nostalgic for many of us, but if you look at the age group of about 16 to 22, they don't know the song at all. So I guess it's bringing back the old song in a new way and appealing to a much wider audience. Do you think that there was a little, there was a pressure also for you, because the song is quite in demand, and people love the song anytime you see the song or hear the song? There is always pressure when you're doing a remake, and this one even more so because Lata ji ka gaya hua gana hai aur Bappi Da ki melody, and I've been very lucky to be very much part of Bappi Da's family, so it was really important to me to do a good job with this song. प्रेशर डेफिनेटली होता है, लेकिन आयरॉनिकली मेरे जितने भी गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं वो रीमेक्स ही हुए हैं। आई थिंक लोगों को मेरा अंदाज़ बहुत पसंद आता है व्हेन इट कम्स टू अ रीमेक। I don't know, maybe I'm doing something right, but it seems to work every time. So there is pressure, but the pressure is usually more कि एक परदेसी is the benchmark and can I do something that good? फैंस की बात की जाए तो फैंस तो आपके गाने को पसंद कर ही रहे हैं, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री फ्रेंड्स आल्सो, द Varun Dhawan has also shown support to you, as well as you have recently made a reel also with Malaika Arora. Yeah. So tell us something about that. How? I feel really fortunate. I have some amazing friends in the industry who are genuinely supporting it. And सबसे पहले मैंने ये वीडियो वरुण को ही दिखाया था before anybody else in the industry, and his positive response and excitement got me so excited. उनको बहुत अच्छा लगा गाना, और उन्होंने मुझसे कहा कि सोफ़ी, नॉट बिकॉज इट्स यू, बट इसका बहुत अच्छा चांस है, ये बहुत ट्रेंड कर सकता है गाना। और आई सर आई जस्ट वांट यू टू लॉन्च इट, बिकॉज लॉन्च तो मैं करूँगा, इसके लिए और क्या करेंगे वो हम बैठ के प्लान करते हैं। तो हिज एक्साइटमेंट, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तक करण जौहर का गाना नहीं दिखाया है। सर मैं दिखाऊंगी, कहता अभी फटाफट उसको दिखाओ। तो मैंने जब करण को भी दिखाया तो उनको इतना पसंद आया, उन्होंने कहा इट्स वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स एंड ही लव्स हाउ आई संग इट। तो उन्होंने अपने आप से ही वो ट्वीट कर दिया, विच इज़ सो स्वीट। एंड देन मलाइका, हु इज़ अ फ्रेंड एंड माई नेबर, और मैंने बस उनसे कहा कि इस पर हम कुछ कर सकते हैं, एंड शी वॉज सो स्वीट टू इंस्टेंटली से येस। तो जो हमने इस गाने पे रील बनाई, लोगों को इतना पसंद आया। आई डोंट इवन थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, बट पीपल वर जस्ट लाइक, you know, the original girls, you know, who we've like loved watching all these years dancing together, वो एक बहुत special moment था। And आपके और भी मतलब कि स्पेशली जब देखा जाता है रीमिक्स की, तो मतलब रीमिक्स में आपका नाम बहुत ऊपर आता है कि मतलब रीमिक्स क्वीन आपको कहा जाएगा। थैंक ये यू। गलत नहीं है, तो मतलब कि आप रीमिक्स ही क्यों बनाती हैं अपने वॉइस में, कुछ और नहीं? मैंने एक्चुअली अपने करियर की शुरुआत की थी ओरिजिनल गानों से, और तब मेरा बैंड होता था लड़कियों का संसारा, तो वो गाने बहुत चले थे। उसके बाद भी मैंने एक ओरिजिनल एल्बम किया था, तो वो ओके चला था। बाबू चल छबीला, एक परदेसी, जादूगर सैया, हंगामा हो गया, इतने बड़े हिट हो गए सारे, दैट आई ओ माई करियर, माई सक्सेस टू दैम। उसके बाद भी मैंने ओरिजिनल एल्बम किए, ऋषि रिच के साथ किया, साउंड ऑफ सोफ़ी, और लोगों को पसंद आया। मैंने पिछला गाना मैंज म्यूज़िक के साथ किया, आज नहीं हो सोना, वो भी ओरिजिनल था, तो लोगों ने पसंद किया। लेकिन समहाउ इन गानों के लिए जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है ना, आई गेस the audience loves to see how I package a song like this. हम इसकी धुन कैसे बदलते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो कैसे बनता है। आई गेस लोगों के दिल में वो सोफ़ी बैठी हुई है, एंड दे लव टू सी दैट फ्रॉम मी। और जब मैं वीडियोज़ में डांस नहीं करती हूँ तो बहुत कंप्लेंट आती है। तो इस गाने पे हमने वही बहुत फोकस किया, टू पुट आउट समथिंग दैट आई लव एंड आई थिंक द ऑडियंस विल लव एज वेल। एक्टिंग, गाने की बात की जाए तो आप गाना भी गा रही हैं, आप एक्टिंग भी कर रही थी, मतलब जी 2-3 फिल्मों में आपने एक्टिंग भी किया हुआ है, तो
एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको कि सॉन्ग्स में ज़्यादा मज़ा आता है, क्या लगता है? मैं हमेशा से सिंगर ही बनना चाहती थी, वो भी पॉप सिंगर। मैंने हमेशा से यही कहा था कि मेरी आवाज़ तो शक्ल मेरी ही होनी चाहिए। और उस वक्त तब प्लेबैक में अलग अलग आवाज़ें नहीं यूज़ करते थे इतना, तो आई वॉज सीन एज अ पॉप सिंगर. By the time they started using different voices in playback, I was acting. So then they were like, ये तो एक्ट्रेस है और तो किसी के लिए गाएगी नहीं. तो प्लेबैक तो मैंने कभी किया नहीं. और जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, तो ग्रोइंग अप इन लंदन आई वॉज अ फिल्मी बच्चा. तो मुझे जब डेविड धवन जी ने फ़ोन किया कि मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा, वो तो एक सपना जैसा था कि लंदन की लड़की के लिए ये हो रहा है. एंड देन आई डिड प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स इन अ फ्यू मोर मूवीज़. लेकिन मूवीज़ में क्या होता था कि बहुत जल्दी आपको टैग कर देते कि आप ग्लैमरस हैं, तो आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगी. और ग्लैमरस का मतलब है कि आपके तो कोई इमोशंस वगैरह तो है नहीं, आपका रोल सब्सटेंस का भी नहीं होगा. तो इनिशियली तो मज़ा आ रहा था, लेकिन उसमें फिर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी. आई वॉजंट रियली डूइंग वर्क दैट आई लव्ड. दिस आई लव, ये अपने गाने. और क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइव शोज़ करती हूँ, मैं बहुत परफॉर्म करती हूँ पूरी दुनिया में. And I love doing that. I love entertaining a live audience. So that is my favorite thing. अगर अपने फैंस के लिए अगर आप 2 लाइनें जी ज़रूर. Well, all of you have loved me so much for my other songs, एक परदेसी, बाबू, हंगामा, and I'm so happy to know you're loving गोरी है. और अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिएगा. गोरी है कलाइयाँ, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे साजना, मांगे है बस तुझे दिल मेरा बेसब्रा. All the time जाने मन करे तेरा शुक्रा. सुन मेरे माहिया, पुकारे तुझे मेरी अंगड़ाइयाँ, अपना बना ले मुझे साजना. मैम आजकल जो है इंडस्ट्री का हाल जो है काफ़ी बुरा हुआ है, बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, इंडस्ट्री का हाल, बॉयकॉट ट्रेंड, कैंसिल कल्चर, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं. आई जस्ट थिंक इट्स प्रीटी सैड, बिकॉज मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप बॉयकॉट कर रहे हो मे बी बिकॉज ऑफ वन पर्सन, बट एक फ़िल्म बनाने में पूरे क्रू, पूरी टीम कहा जाता है. हज़ारों लोग होते हैं जिनकी ये रोज़ी है, जो मेहनत करते हैं. तो टू बॉयकॉट अ मूवी बिकॉज ऑफ वन पर्सन, यू आर ऑल्सो अफेक्टिंग अ होल इंडस्ट्री, टेक्नीशियंस जो बहुत मेहनत करते हैं. तो आई थिंक इट्स सैड. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी किसी को कभी अफेंड करने का इरादा रखता है. अनफॉर्चुनेटली शायद कभी कभी हो जाता है. बट आई जस्ट फील कि जो भी है, जिसने पिक्चर देखनी है उनको देखनी चाहिए, जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखेंगे, वो तो नेचुरल है. बट जस्ट व्हेन यू आर बॉयकॉटिंग समथिंग, जस्ट थिंक अबाउट everybody and the years of work and मेहनत and the talent, because सिर्फ एक पर्सन अफेक्ट नहीं होता है, पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है. साउथ फिल्मों की बात की जाए तो साउथ फिल्में जो है बॉलीवुड मतलब एक तरह से ओन कर रही हैं अभी, मतलब कि बॉलीवुड चला रही है, क्योंकि जो भी बॉलीवुड की बड़ी फिल्में हैं वो चल नहीं रही हैं. तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक इंडियन हूँ, तो मेरा ये मानना है कि ये एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वे ऑल वन. तो आई जनरली डोंट लाइक टू डिवाइड बिटवीन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. वी लाइक टू सी एवरीथिंग. आई थिंक कोविड के दौरान जब हम लॉकडाउन में थे, तब हमें बहुत सारे कंटेंट को हम एक्सपोज हुए हैं, और बहुत रीजनल लैंग्वेजेस को. तो लोगों ने देखा कि ओ ऐसी भी फिल्में बनती हैं, वैसी भी फिल्में बनती हैं. तो शायद अभी जो लोग पहले एक्सेप्ट कर लेते थे, अब सबका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया है. पीपल रियली वांट टू बी एंटरटेन्ड एंड द स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई. तो शायद the films like, you know, like Pushpa, RRR, people are finding KGF, people are finding them very entertaining and they're high standards. So yeah, I don't think it's necessarily negative. It just pushes everyone to work harder, do better work. और अब सबको एहसास हो गया कि audience will not just accept anything. You know, everybody needs to really work hard. लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि एक्चुअली किसी को हिट फॉर्मूला नहीं पता. अगर पता होता तो सारी फिल्में हिट ही हो रही होती हैं. साउथ में भी अगर आप देखें, कुछ फिल्में हिट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. यहाँ पे भी वी हैड अ भूल भुलैया, ना जुग जुग जो चली हैं. तो ऐसा नहीं है. We actually don't know the formula of a hit, so all we can do is do our best to make entertaining, good movies, and that's the best everyone can do. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को?
मैं अपने फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर लविंग गोरी है. आई एम गेटिंग एन अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑलरेडी एंड आई नो मैं बहुत गैप्स छोड़ती हूँ अपने सिंगल्स में, लेकिन इस साल मैं ज़रूर एक और सिंगल लेके आऊँगी एंड आई विल कीप डूइंग मोर म्यूजिक एंड जस्ट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड just keep listening to the song. Sophie ji, just a rapid fire round. So reveals first. Okay. So first job. First job as a VJ when I was in college on ZTV UK with my own show, जो 4 साल तक number 1 show था वहाँ का. Okay. First paycheck. First paycheck ZTV UK when I was a VJ. First professional photo shoot. Oh, first professional photo shoot वो बॉम्बे आके हुआ था with probably डब्बू रत्नानी और सुबी सैमुअल back in the day. वो photos अभी तक मेरे पास है, मैं बहुत छोटी थी. First celebrity moment. First celebrity moment was me actually meeting Mr. Bachchan when I was a teenager because वो he knew my family and वो office आके उन्होंने मुझे surprise किया था and I was starstruck. But as a professional first celebrity moment जब मैं UK में थी on my show interviewing Shah Rukh Khan, it was amazing. First time you fell in love? First time I fell in love was when I saw Salman Khan as Prem in मैंने प्यार किया. First time you felt like a star? First time I felt like a star was probably after once I became a VJ on MTV and I went for a show and I was mobbed. Okay, no, I'll reframe that. First time I felt like a star actually तब मैं हिंदुस्तान आई भी नहीं थी, मैं UK में थी और मेरा शो इतना बड़ा था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन होता था जी का जहाँ हज़ारों लोग आते थे and I was mobbed and the security, I'll never forget it, he literally had to pick me up ऐसे and take me out. It was crazy. I never knew I had a fan following and I was just 18 then. First encounter with makeup? First encounter with makeup, ever since I was a kid, yaar. My mom was an absolute and is an absolute diva, so I was applying makeup from a very young age. First phone? First phone, good question. Probably like one really purana Nokia. I may have it still. First car or vehicle? First car or vehicle that's not my parents, that I bought with my own money was when I moved here and I was a VJ and I bought a Corolla and I still have it. I think it's almost an antique piece now. First pet? First pet, I've always had dogs. So in London, I've had dogs and in Mumbai also, my baby Tia is my Jaan. First celebrity interview? First celebrity interview was the amazing Shah Rukh Khan. And Karan Johar's daddy, Yashankar. Okay. First stage performance? Wow. First stage performance was with my girl band Sansara, performing somewhere in India, and then the first big one was performing at the Nassau Coliseum in New York. That was big. First exam fail or pass? I have topped every single exam in my life. I am an A+++ student. The only exam I ever failed was my first driving test, and I think he was in a bad mood and that's why he failed me, because I've never failed anything. So yeah, that's a sore point. First foreign visit? First foreign visit, living in London, we used to go to Paris and everything very often, but I remember my first time in a plane was to Florida. And I remember walking to the plane, sitting on the seat. I must have been about 4 or 5. And I remember saying to my mom, "मैं जूते उतार लूँ?" First solo trip? First solo trip, yeah, probably like when I was in college, I think, going to Europe. It wasn't really solo, it was still with a couple of friends. I don't think I've ever gone alone anywhere. First debut shoot? First debut shoot must have been for, I don't know, my first debut shoot means as in like a video or something? Yeah, first whatever you shoot first. I think the first thing I ever shot was my show for ZTV UK, but my first music video was with my girl band Sansara, and we shot that
in the Andaman Islands over here. That was crazy. First co-star? First co-star, Zayed Khan and Sanjay Dutt in my first movie, Shadi Number 1. Okay. Now we'll ask you about what you eat in a day. Okay. Okay. As you are one of those blessed souls who can eat, are you one of the blessed souls who can eat anything and get away with it? I really don't like people who can eat anything and get away with it. I work hard, I work out regularly, I maintain my fitness, but I'm also a Punjabi, so I like to eat my food. Okay, what do you usually eat for breakfast, lunch or dinner? Breakfast is usually oats porridge with berries or avocado toast or eggs with a toast. I really like breakfast, so that's my main meal with a coffee. Yeah. You want to know about my entire... This is enough, no? Around what time you have your last meal? I have dinner by 8 o'clock, and I actually, one of my favorite things to eat for dinner is khichdi with achar. Are you an early riser or a night owl? I'm a full early morning person, which is really not helpful in this industry because everyone here is night birds and I wake up early. वो सो रहे होते हैं और मैं जाग रही होती हूँ. Your favorite meal of the day, favorite cuisine? My favorite cuisine, apart from maa ke haath ka khana, has to be Thai or Japanese. What time day is the best to work out? I like working out in the morning, like 10 o'clock is my perfect time to work out. Are you strict no-no in your diet? No, I'm not a strict no-no. If I feel like having something, I have it, but I'm portion conscious. Healthiest alcohol according to you? Everyone says it's tequila is the healthiest alcohol. So I'm just gonna, yeah, vodka or tequila, the spirits are, but none of them are really healthy, let's be honest. Your favorite healthy munchies? My favorite healthy munchies, dry fruits, makhanas, things like that. Your favorite street food? Favorite street food has to be pani puri, golgappe, they're the best. Your favorite dish for a cheat day? My favorite dish for a cheat day would be like biryani, pulao, or then pancakes. Yum. Any lifestyle changes you have made over the years? Lifestyle changes that I made over the years, amazing question. I think focusing not just on my physical health, but mental health. Like especially after the whole COVID pandemic, I think I've just made those changes, realizing that we have to be fit mentally and physically, not just physically. Okay, thank you very much. Thank you. All done? Yeah. Oh, that wasn't so scary.